मैंने एक पोस्टर इलस्ट्रेट किया था फ्री पैलेस्टाइन के ऊपर। आज मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट किया था एग्जीबिशन में। मैंने एक पोस्टर इलस्ट्रेट किया था फ्री पैलेस्टाइन के ऊपर। मैंने इस पोस्टर में ये डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि जो पैलेस्टाइन है उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उसके ऊपर जो गोन बाय गोन वॉर्स हो रही हैं इजराइली की तरफ से, वो सही नहीं। ये इस एग्जीबिशन में 43 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों थे। इसमें मेरा पोस्टर सबसे पहले आया था और ये सबसे ज़्यादा क्लियर इसलिए है कि इसमें ये बताया गया कि मतलब मासूम लोगों की नस्लकशी बंद कर दिया जाए। This event was about the international perspective of Palestine through the media, either international media or Asian media and Pakistani media too. So a lot of students have wrote research papers. It was judged and reviewed by their teachers, and they gave them comments and recommendations to convert this effort to a book. Plus the BS students have explained about their media projects. Some of them were posters, some were videos. They have been producing a lot of work to support Palestinian issue and against the war in Gaza. Unfortunately, the international media is biased. We have 3-4 channels internationally that are neutral enough and working according to the media ethics to cover Palestinian issue in general and this war in specific. But this war have highlighted the role of what I can say, the social media activists, the independent producers of media, which made it difficult for the international media to keep publishing fake news, to keep publishing things that are not related to the facts and what's happening on the ground.